Very good afternoon. Namaste to all the participants joining with us this Saturday. In our session planned for today, we have two awardees sharing with us their initiatives of community participation and leadership skills that elevated their school. This is a theme that we wish to explore in detail in future and bring forth the laudable work done by awardees in their uniquely challenging situations. Today we have with us Sri Vikas Mahajan, NAT awardee from Himachal Pradesh in 2019. We also have Ms. Archana Gurung Madam, National Awardee Teacher from Sikkim in 2020. Let me invite our first speaker for today's webinar, Sri Vikas Mahajan sir. He has taken several initiatives for the development of this school. His students have gone ahead to establish themselves in fields of repute. He has worked for the renovation of his school in Chamba, mobilizing the alumni and community for making contributions, for providing uniforms to economically weaker students, and for providing free coaching to aspirants of entrance tests. He has helped in increasing the enrollment in the school. I welcome Vikas sir. Thank you very much for taking out your valuable time and joining with us today. I would request you to kindly share your insights with us now after this video. राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय चंबा हिमाचल प्रदेश के शिक्षक विकास महाजन ने विद्यालय के नवीनीकरण के लिए कई कदम उठाए। छात्रों की विज्ञान में रुचि बढ़ाने की ओर खास जोर दिया। हमने ब्लेजर्स कंपलसरी किए बच्चों के लिए, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसके लिए स्टाफ ने और हमने मिलकर कंट्रीब्यूट किया और 150 बच्चों को ब्लेजर बांटे। जेईई NEET उम्मीदवार छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे स्कूल में नामांकन बढ़ाने में मदद मिली। साथ ही भूतपूर्व छात्रों और समुदाय के सहयोग से आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करने में योगदान दिया। श्री विकास महाजन को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। Should I start? Yeah, sure. सभी को नमस्कार। मैं विकास महाजन हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर चंबा, जिसकी कुल पॉपुलेशन 25,000 के अराउंड वोट है, वहां से आप सबके साथ जुड़ा हूं। मैं सबसे पहले तो अपने डायरेक्टर सर का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हम सब अवार्डीज को या बाकी मेंबर्स को ये एक प्लेटफॉर्म ऑफर किया है ताकि हम अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और बच्चों की बेहतरी के लिए उसे अपने अपने स्कूल में अगर पॉसिबल हो सके तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। इसके साथ ही मैं टीम MHRD के यंग प्रोफेशनल्स का इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए और मेरे को अवार्डीज का और अदर मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस वेबिनार के लिए, इस मीट के लिए अपना समय निकाला। आज मैंने इस वेबिनार के लिए, इस मीट के लिए जो चर्चा का विषय चुना है वे है टीचर ए रोल मॉडल। मैं एक पीपीटी के थ्रू इसको शेयर करना चाहूंगा। मैंने आज के इस मीट के लिए जो चर्चा का टॉपिक चुना है वे है टीचर ए रोल मॉडल एंड एक्सपाउंडर। जानते हो ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है, एक्चुअल में मेरे जीवन की दशा और दिशा को चेंज करने में मेरे दो टीचर्स का, एक मैथ में जो मेरे को +1 +2 में पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, श्री सुभाष महाजन जी, और दूसरे केमिस्ट्री पढ़ाने वाले श्री सुनील गुजराल जी का बड़ा अहम रोल रहा है। उनका पढ़ाने का स्टाइल, उनका बात करने का सलीका, उनका सोसाइटी में उनकी इमेज और ओवरऑल पर्सनैलिटी ने मुझे इतना प्रभावित किया कि +2 पास करते करते मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मैंने भी बड़े होके इन्हीं की तरह स्कूल लेक्चरर बनना है और बच्चों को पढ़ाना है। ग्रेजुएशन हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, डेस्टिनी ने साथ दिया और पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास करके
मैं भी इन्हीं की तरह एक स्कूल लेक्चरर बन गया और 94 में मैंने अपनी सर्विस गवर्नमेंट स्कूल में शुरू कर दी। आज भी जब मेरे को कोई पुराने टीचर मिलते हैं या फिर सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट करते हैं कि सर यू आर द बेस्ट फिजिक्स टीचर एवर, या आपके द्वारा पढ़ाए गए कंसेप्ट आज भी हमारे दिलो दिमाग में उसी तरह से तरोताजा हैं जैसे आपने 15 साल या 20 साल पहले पढ़ाए थे, या फिर वो भी मेरी तरह टीचर बन के मेरे को कहते हैं कि हम भी आपकी तरह पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिल बहुत खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैंने जीवन का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। एमएचआरडी का या एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या फिर हम सब का एक ही रोल रहता है कि किस तरह से हम अपने स्कूल की डेवलपमेंट कर सकें या बच्चों की कैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। बट एमएचआरडी के पास या गवर्नमेंट के पास या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के पास ऐसा कोई सेट फार्मूला या कोई रूल नहीं है कि जिसको हम अप्लाई करें और बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाए या स्कूल की डेवलपमेंट हो जाए। रीजन बीइंग, और ऐसा सेट फार्मूला कोई हो भी नहीं सकता। कारण उसका ये है कि डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर हर जगह पे हर विद्यालय में हर बच्चे की सिचुएशन डिफरेंट है। आप किन्हीं दो बच्चों को या किन्हीं दो जगहों को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं दोनों का कर सकते हैं। कर्नाटक के बच्चे की जरूरत कुछ और है, बिहार के बच्चे की जरूरत कुछ और है, इसी तरह से गांव के बच्चे की जरूरत कुछ और है, शहर के बच्चे की जरूरत कुछ और है। हर एक जगह पे हमारे पास डिफरेंट तरह की सिचुएशंस हैं। कहीं पे पानी की समस्या है, कहीं पे एनरोलमेंट नहीं है, और अगर कहीं पे एनरोलमेंट है तो स्टाफ पूरा नहीं है, टीचिंग स्टाफ पूरा नहीं है। इसी तरह से कहीं पे लैब की प्रॉब्लम है तो कहीं पे ग्राउंड की प्रॉब्लम है, कहीं पे कम्युनिटी एकदम से आपके साथ साथ आने को तैयार हो जाती है और कहीं पे कम्युनिटी को मोबिलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात करूं तो इन बड़े शहरों में पेरेंट्स की अपनी एक प्रायोरिटी रहती है कि उनको अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर सकें। बट अगर मैं ग्रामीण प्रदेश में रहने वाले भारत के बच्चों की बात करूं तो ग्रामीण प्रदेश में रहने वाले बच्चों पेरेंट्स के लिए बच्चों की एजुकेशन जो है वो लास्ट प्रायोरिटी है। वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते। जितनी मर्जी समस्या हो, चाहे जैसी भी समस्या हो, हर एक समस्या का एक ही सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है एक डेडिकेटेड टीचर, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसके इनोवेटिव आइडियाज, और आउट ऑफ द बॉक्स जाके इन समस्याओं का ना केवल समाधान करना बल्कि इनको इन समस्याओं को अपनी फेवर में यूज करना ताकि हम बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकें। मैं अब यहाँ पे आपको कुछ एक टीचर्स के एग्जाम्पल दूंगा जो हम मेरे साथ को अवार्डीज रहे हैं 19 सितंबर 2019 में, और आप देखेंगे कि किस तरह से ओड सर्कमस्टांसिस में भी इन्होंने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से और अपने इनोवेटिव आइडियाज की हेल्प से बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पवित्र मोहनदास जी का। ये उड़ीसा से हैं। इनके विद्यालय में बड़े बड़े पत्थरों की समस्या थी। इनके विद्यालय के कैंपस में बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। जनरली हम पत्थरों को देख के कहते हैं कि ये तो हर्डल्स हैं, बट इन्होंने इन्हीं हर्डल्स का बेहतरी से यूज किया और इनको टीचिंग लर्निंग टूल्स के रूप में इस्तेमाल करके बच्चों की पढ़ाई के लिए इनको यूज किया और विद्यालय को एक स्टोन गार्डन दिया। ये इस पिक्चर को देखने से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये इस ऐसे एरिया का स्कूल है जहां पे जो रूरल इंडिया में अगर हम चले जाएं तो ये हर एक स्कूल की ये समस्या रहती है कि बच्चों के पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल की कमी रहती है। किसी के पास कॉपी नहीं होगी, किसी के पास पेन नहीं होगा, किसी के पास रबड़ नहीं होगा, किसी के पास शार्पनर नहीं होगा। तो इस समस्या को देखते हैं, और इवन इन गाँव में भी दुकान में भी या तो दुकान अवेलेबल नहीं होगी, अगर होगी तो ये चीजें वहां पे अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो इस चीज को देखते हुए इन्होंने अपने विद्यालय में ही एक राम की दुकान नामक एक कंसेप्ट शुरू किया और इसमें बच्चे की जरूरत से जुड़ी हुई हर एक चीज को वहां पे उपलब्ध कराया और एक रेट लिस्ट लगा दी, और बच्चे उस रेट लिस्ट से देख के अपने अपने हिसाब से जिसको जो जो चीज की जरूरत होती थी वो चीज लेते थे, उसकी जगह पे उसके पैसे रखते थे या काट लेते थे, या फिर अगर उनके पास पैसे नहीं है तो भी उनको फ्रीडम थी कि वो मुफ्त में भी उन बुक्स को ले जा सकते हैं। इस तरीके से ना केवल इन्होंने बच्चों की जरूरतों को पूरा किया बल्कि उनमें एक मैथमेटिकल समझ भी विकसित की और मोरल एजुकेशन भी इनकलकेट की। ये मैडम बनीता गर्ग हैं, ये दिल्ली से हैं, और इन्होंने कोडिंग जैसे विषय को गा गा के रोचक और सरल बनाने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ये मैडम कल्पना शर्मा है, भीलवाड़ा राजस्थान में प्रिंसिपल हैं। इन्होंने समुदाय को अपने साथ इस तरह से जोड़ लिया कि समुदाय ने इनके ऊपर इतना विश्वास किया कि इनके विद्यालय की स्ट्रेंथ 300% तक बढ़ गई। ये रम्या परमेश्वर अय्यर मैडम है, केवीएस गुवाहाटी में है। इन्होंने अपने विद्यालय में आधुनिक साइंस लैब की कमी को महसूस किया। और जनरली होता ये है कि टीचर्स के दिमाग में ये आता है कि अगर विद्यालय में साइंस लैब नहीं है तो इसको प्रोवाइड करना या तो गवर्नमेंट का काम है या तो फिर प्रिंसिपल का काम है। बट इन्होंने अपने आप इनिशिएटिव लिया, अपने आप इन्होंने केवीएस संगठन के साथ कोरस्पोंडेंस शुरू की और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, टाई अप करके विद्यालय में आधुनिक साइंस लैब को बच्चों के लिए उपलब्ध करवाया। और इसके अलावा इन्होंने किया कि बच्चों की बर्थडेज को इन्होंने प्लांटेशन के साथ जोड़ा। और इस तरह से अगर किसी विद्यालय में मान लो 1000 विद्यार्थी हैं, अगर वो अपने अपने बर्थडे पे एक एक प्लांट लगाएंगे तो साल में 1000 प्लांट्स ना केवल लगेंगे बल्कि बच्चे उन पेड़ों के साथ इमोशनली भी अटैच हो जाएंगे और उसके रख रखाव का, उसको पानी देने का, उसकी ग्रोथ को देखने का काम भी इमोशनली जुड़े होने की वजह से उसका करेंगे और हमारे पर्यावरण में एक समृद्ध पर्यावरण की तरफ हम जा सकेंगे। ये महेश कुमार एम सर हैं, ये केरला से हैं। ये उसी ग्रामीण भारत से आते हैं जहां की मैं बात कर रहा था कि पेरेंट्स की बच्चों को स्कूल में भेजना लास्ट प्रायोरिटी होता है। और इनके विद्यालय की स्ट्रेंथ सिर्फ 13 थी और इन्होंने बच्चों की एजुकेशन के लिए पढ़ाई के साथ साथ उनको घर से लाने और ले जाने का जिम्मा भी अपने सिर पे लिया और बच्चों के लिए ये ड्राइवर भी बन गए और अपने विद्यालय की स्ट्रेंथ को 13 से इन्होंने 43 तक पहुंचा दिया। ये नेक्स्ट ये हैं डॉक्टर ए जेबिन जोयल, महाराष्ट्र से हैं ये और ये फिजिक्स के टीचर हैं। इन्होंने फिजिक्स के विषय को बच्चों में रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए 1, 2, 5, 7, 10 नहीं बल्कि 82 सेल्फ मेड मॉडल्स का निर्माण किया ताकि बच्चों को फिजिक्स के कंसेप्ट्स जो हैं वो आसानी से समझ आ सकें। ये एस शशि कुमार सर हैं, पौंडीचेरी से हैं ये और ये यंग भी हैं और डायनामिक भी हैं और इन्होंने अपने साथ समुदाय को इस तरह से जोड़ा और स्पॉन्सर्स को इस तरह से जोड़ा कि उनकी सहभागिता से विद्यालय को बहुत ही ज्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव बना दिया। याद रहे, स्थानीय लोग आपके साथ तभी जुड़ेंगे अगर उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारे सुरेश माराकला सर हैं, कर्नाटका से हैं। इन्होंने ना केवल बच्चों की एजुकेशन के ऊपर फोकस किया बल्कि उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे जितनी मर्जी स्किल डेवलपमेंट की मुहिम चला ले, कोई भी स्किल डेवलपमेंट की मुहिम कामयाब नहीं हो सकती जब तक हमारे पास सुरेश माराकला जैसे डेडिकेटेड टीचर्स उपलब्ध ना हो। ये राधिका दलवे मैडम है, ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। ये विजडम वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल हैं। इनके स्कूल में ना तो एनरोलमेंट की कोई समस्या थी ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई समस्या थी, बट इन्होंने बच्चों में गरीब इन्फेंट्स के प्रति एक संवेदनशीलता की भावना को उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिस्ट बहुत लंबी है, हर किसी का जिक्र करना यहाँ पे जिक्र करना पॉसिबल नहीं है, पर एक बात इन सब में कॉमन है और वो है इन सब की क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेटिव आइडियाज और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम करने की क्षमता। और इसी क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव आइडियाज की वजह से इन्होंने ओड सर्कमस्टांसेस में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए वो कार्य किए जो उदाहरण बन गए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल टीचर का बच्चे की एजुकेशन के लिए रहता है वो रहता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल को किस तरह से उसके कॉन्फिडेंस लेवल को रेज करे। हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि किसी भी तरह से बच्चे का कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो गिरना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं कि जीवन की आधी लड़ाई कॉन्फिडेंस से ही जीती जा सकती है। आज के दौर में पेरेंट्स का एक रुझान सा हो गया है कि वो बच्चों को सरकारी स्कूलों से दूर रख रहे हैं। इसमें मैं पेरेंट्स को दोषी नहीं मानता, कुछ तो कमियां हमें भी रही होंगी कि बच्चों की पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल्स की तरफ रुख किया है। मैंने
अप्रैल 2013 में गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा में एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया। ये वही विद्यालय था जहां पे मैंने 6 से +2 तक की पढ़ाई भी हासिल 1981 से लेके 1981 से लेके 1988 तक 6 से +2 तक की पढ़ाई भी पूरी की थी। ये उस समय का बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय था, पर आज की डेट में लोगों का इस विद्यालय के प्रति नजरिया बदल रहा था, और उसका कारण भी मेरे ज्वाइन करने के कुछ दिनों के बाद ही मेरे को उसका कारण भी समझ आ गया। विद्यालय की दीवारें कई सालों से रंग रोगन को निहार रही थी। खिड़कियां जालियां जगह जगह से टूटी हुई थी। कुछ एक स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विद्यालय की हालत उस समय पे कैसी थी। जगह जगह से दीवारें उखड़ी हुई थी, दरवाजों की हालत बड़ी खस्ता थी, खिड़कियों पे जगह जगह पे पैच वर्क हो रखा था, और अब तो सिचुएशन ये आ गई हुई थी कि पैचेस के लिए भी कोई जगह नहीं रह गई हुई थी। जल्दी इवन विद्यालय की छतें जो है वो लीक कर रही थी, और इमीडिएट रिपेयर या रिप्लेसमेंट देख रही थी। जल्दी डिपार्टमेंट के साथ कोरस्पोंडेंस की गई, बिल्डिंग फंड कमेटी की हेल्प ली गई, और बिल्डिंग फंड कमेटी की हेल्प से विद्यालय को हेड टू टो रिपेयर या रिप्लेसमेंट का कार्य शुरू किया गया। दरवाजे जहां पे चेंज करने की जरूरत थी वहां पे बदलाए गए, और जहां पे रिपेयर करने की जरूरत थी वहां पे रिपेयर की गई। छतों को बदल दिए, जो लीकिंग रूफ्स थी उनको चेंज कर दिया गया। छतों में पेंट की जरूरत थी तो पेंट वगैरह किया गया। दरवाजे का, ये स्कूल का एक पुराना गेट था जो अब जर्जर हालत में हो चुका था, और बहुत स्कूल की स्ट्रेंथ के हिसाब से तंग भी था। इसकी जगह पे नया और अट्रैक्टिव गेट का निर्माण किया गया, और ताकि बच्चों को ये गेट जो है अपने प्रति अट्रैक्ट कर पाए। स्कूल डिप्टी कमिश्नर चंबा की हेल्प से स्कूल में एक मॉडर्न लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। एक्चुअल में हमने जेई मेंस और नीट के लिए ऑफ आवर्स में, स्कूल आवर्स के बाद कोचिंग का कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर चंबा जो उस टाइम पे हरिकेश मीना जी थे, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इवन यूपीएससी क्लियर करने से पहले वो भी कोटा के किसी इंस्टीट्यूशन में केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, तो वो भी रूटीन में हमारे विद्यालय में आके बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते थे, हमारे साथ केमिस्ट्री पढ़ाते थे। और उनके पास मैंने जब लाइब्रेरी की समस्या का रखा कि हमारे पास एक मॉडर्न और आधुनिक लाइब्रेरी की जरूरत है, तो उन्होंने बिना किसी देर किए हुए एक मॉडर्न और आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण करने के लिए जीएमआर इंफ्रा के मैनेजर को बोला, और जीएमआर इंफ्रा के मैनेजर ने एक मॉडर्न और आधुनिक लाइब्रेरी, गोदरेज के फर्नीचर से सुसज्जित लाइब्रेरी का निर्माण हमारे विद्यालय के लिए कर दिया। विद्यालय के बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग से सैंक्शन करवाई गई, अप्रूव कराई गई, और विद्यालय के बच्चों के लिए एक नया आधुनिक साइंस ब्लॉक का निर्माण भी करवाया गया। वो हर कार्य करने की कोशिश की गई, मेरे और स्टाफ के द्वारा हर कार्य करने की कोशिश की गई जो बच्चों के बेहतरी के लिए, और बच्चा, हमारे स्कूल के बच्चे शर्म से नहीं बल्कि गर्व से कह सकें कि वो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं। मैं ये समझता हूं कि टीचर में इतनी कैपेसिटी और इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी सिचुएशन में को हैंडल कर सकता है और किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में बदल सकता है। बस जरूरत होती है थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स की। अगर हम अपने रूटीन के काम के साथ थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करें तो हमें आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, और हमारे विद्यालय को भी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिले। हमने स्टेट लेवल के ऊपर और नेशनल लेवल के ऊपर अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया, और हमारे बच्चों ने स्टेट मेरिट लिस्ट पे अपना नाम दर्ज कराना शुरू कर दिया। इवन स्पोर्ट्स में हमारी अचीवमेंट रिमार्केबल रही। हम स्टेट और नेशनल लेवल तक बच्चों ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेशन रही, और इवन एनएसएस में स्टेट लेवल रिपब्लिक डे परेड में लगभग हर साल ही हमारे बच्चे की सिलेक्शन जो है स्टेट लेवल रिपब्लिक डे परेड के लिए होती रही है। मई 2019 में डिप्टी कमिश्नर चंबा ने जब यहाँ पे चंबा में ज्वाइन किया तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं चंबा जिला के 25 टॉपर्स के साथ मिलना चाहता हूं, उनके साथ काउंसलिंग करके बात करना चाहता हूं। चंबा जिला में 200 के करीब गवर्नमेंट और प्राइवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जहां पे +2 तक की पढ़ाई होती है, और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इन 25 टॉपर्स में से 10 टॉपर्स मात्र हमारे विद्यालय से ही थे।
और बच्चों के आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन की वजह से इस छोटे से शहर चंबा में हमारे विद्यालय को बहुत मौत पब्लिसिटी भी मिली, और इसकी वजह से लोगों ने अपने विद्यालय को, पेरेंट्स ने अपने स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्कूल से हमारे स्कूल की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और 2016-17 में जो हमारे विद्यालय की स्ट्रेंथ 725 थी, मई 2019 आते आते 928 हो गई। इसके अलावा हमने बच्चों की कॉन्फिडेंस लेवल को रेज करने के लिए, कि उनको ना लगे कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे ब्लेजर पहनते हैं, हमारे पास ब्लेजर्स, हमें ब्लेजर नहीं है, हमने ब्लेजर स्कूल में कंपलसरी किए। बट किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के लिए इस तरह का डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ रहता है। टफ इसलिए रहता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 700-800 या 1000 रुपए के ब्लेजर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों का हमें भी ध्यान था। पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग, स्टाफ के साथ एक मीटिंग की गई, और स्टाफ मीटिंग में हम सब ने एक निर्णय लिया कि इस तरह से बच्चों को जो ब्लेजर्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और इनको शॉर्ट लिस्ट करके हम अपने से इन बच्चों को ब्लेजर्स जो है वो गिफ्ट करेंगे। और ऐसा किया भी गया, और ऐसे 150 बच्चों को हमने शॉर्ट लिस्ट किया, 150 से ज्यादा बच्चों को हमने शॉर्ट लिस्ट किया और उनको ब्लेजर्स प्रोवाइड किए। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ा ही, साथ में कुछ एक बच्चे तो ऐसे भी थे जिन्होंने ब्लेजर अपने आप में पहली बार पहना था, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखने का मजा ही कुछ अलग था। हर स्कूल की अगर कुछ कमियां रहती हैं तो उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स भी रहती हैं। हमारे विद्यालय की स्ट्रेंथ थी कि हमारा विद्यालय 1863 से चंबा शहर में शिक्षा की लो जगाए हुए था। लगभग हर रिनाउंड आदमी, हर सोसाइटी का मेंबर इस स्कूल का एक्स स्टूडेंट रह चुका था, पूर्व छात्र रह चुका था। ऐसे ही पूर्व छात्रों को जो क्लास 1 गेस्टेड पोस्ट से रिटायर हुए थे, हमने विद्यालय में एनुअल डे के दिन आमंत्रित किया। पर्पस दो थे। एक, कि हमारे विद्यालय के छात्रों को भी लगे कि ये लिविंग लीजेंड्स जो हमारी सोसाइटी के एक महत्वपूर्ण लोग हैं, ये भी कभी हमारी तरह ही स्टोरियस स्टूडेंट्स की एक फाइनेंशियल हेल्प हो सके। और हमने ये दोनों ही पर्पस बखूबी हल किए। बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल तो रेज हुआ ही हुआ, साथ में इन पूर्व छात्रों ने हमारे पुअर बट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए 2,14,000 रुपए के स्कॉलरशिप राशि को प्रदान किया। और एक हमारे बच्चों ने इनके लिए एक पैरोडी जो है वो प्रस्तुत की, पैरोडी इनको डेडिकेट की, इन पूर्व छात्रों को डेडिकेट की। और ये पूर्व छात्र अपने पुराने विद्यालय में, जहाँ पे ये 50-60 साल के बाद पहुंचे थे, वहां पे इतने खुश हो गए, इतने मगन हो गए कि ये थिरकने से भी अपने आप को रोक नहीं सके। मैं चाहूंगा कि अंत में आपके साथ इनका वीडियो जो है वो जरूर शेयर करूं। जो मैं तो उस वीडियो को बिल्कुल फील करता हूं, मेरे तो आज भी दिल के उतने ही करीब है। और इस प्रस्तुति को मैं यहाँ पे ये भी बात करना चाहता हूं कि इस प्रस्तुति ने इतनी सराहना शहर में प्राप्त की कि इसके बाद आसपास के कई स्कूलों ने इस तरह के कार्यक्रम अपने अपने विद्यालयों में किए। मैं लास्ट में इस वीडियो को आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मैं लास्ट में, अंत में सिर्फ एक बात के साथ अपने बात को खत्म करना चाहता हूं कि हमारे पास बच्चे नहीं आते हैं, हमारे पास एक रॉ मटेरियल आता है जो उन्नत देश के निर्माण में इस्तेमाल होने के लिए एक रॉ मटेरियल आता है। अब हम पर है कि उस रॉ मटेरियल को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उस रॉ मटेरियल से टेढ़ी मेढ़ी या कच्ची ईंटें बनाएंगे तो निश्चित तौर पे हम उन्नत देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वहीं पे अगर मजबूत और सुडौल ईंटों का निर्माण हम उस रॉ मटेरियल से करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाला भारत बहुत ही सक्षम, बहुत ही समृद्ध और बहुत ही विशाल बनेगा। हर एक बच्चे के पास एक यूनिक टैलेंट होता है, हर एक बच्चा हमारे पास एक यूनिक टैलेंट के साथ आता है। और कोई पढ़ने में अच्छा होगा, कोई गाने में अच्छा होगा, कोई खेलने में अच्छा होगा, कोई नाचने में अच्छा होगा। हर एक का अपना एक अलग टैलेंट है। जरूरत है कि उस टैलेंट को पहचानने की और उसको स्कूल लेवल पे ही उसको एक बेहतर धार देने की। याद रहे कि एक टीचर को उसके द्वारा पढ़ाया गया बच्चा याद रहे ना रहे, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को उसका टीचर, उसका रोल मॉडल, उसका एक्सपाउंडर जीवन भर याद रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं अपने डायरेक्टर सर का,
हमारे MHRD के यंग प्रोफेशनल्स का, मेरे को अवार्डीज का और अदर मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और कि उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट टाइम जो है इस चर्चा के लिए दिया ताकि हम स्टूडेंट हित में कुछ कदम उठा सकें। अब लास्ट में मैं आपके साथ उस वीडियो को शेयर करने की अनुमति चाहूंगा। मैम करूं मैं? Yes, sir. हेलो। Sure. Yes, sir. Please. Years. So please welcome the students of our school to give their performance. जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे। ये सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया कुछ ऐसे चिकने चेहरे, मुझे कुछ ऐसे चिकने चेहरे, तू कैसे न नजर फिसले, तू कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। तेजा चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। न जट यमला पगला दीवाना हो, किसी बात न जाना के ओ मैं शहर कर दी है, सजे उठे वो मर दी है। ऐ मेरी ज़ुहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। रंग का रंग जमा हो चकाचक, हिरला पान चबा, आहा और ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। तुमने कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी को दिल दिया, मैंने भी दिया। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। गाओ शांति 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 ओम शांति 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 ओम।
आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आता है। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे कलाकारों और अतिथियों के लिए। Thank you, ma'am. Thank you, Director sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you for that inspiring session and all the commendable initiatives you have taken, sir. The video of the Alumni Reconnect is a really heartwarming one. And this is a unique way to enhance community connect back to their schools, right? Okay, all the participants who have joined with us today must have seen the poster for the webinar, right? I can again show it to you. So let's have a question regarding that. I will just show you the poster once again. You can see the quote here. I can have a small pop-up quiz right now so that we can ensure that
everybody can participate in one more competition during this webinar. Please write your guesses in the chat box when I tell this quiz question. Who can we attribute this philosophy to? The difference, what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead. We all can just type our answers in the chat box, please. Moving further, to illuminate us with the innovative ideas, I would like to now invite our next speaker, Miss Gurung. Miss Archana Gurung Madam is a principal in a government higher secondary school who has made efforts to make her school a safe and joyful place for students. She has brought in innumerable confidence building exercises for the students and has worked hard with the community to upgrade school infrastructure. She has introduced innovations like Zumba dancing and a school band to engage the children, while at the same time introducing a system of attendance 5 times a day to bring down truancy in the school. Thank you for joining us today, Archana ma'am. Would request you to begin your session now after the video, please. Okay. First of all, very warm good evening and namaskar to our director, sir, team of education department, and my dear friends. So my video is coming up, I think. किसी स्कूल की चहरदीवारी को एक आनंदमय स्थान कैसे बनाया जा सकता है, इसके उदाहरण हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोरथांग सिक्किम की प्रिंसिपल श्रीमती अर्चना गुरुंग 5 बार उपस्थिति प्रणाली विकसित कर छात्रों की उपस्थिति पढ़ाई के तनाव को कम करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का पहला स्कूल बैंड बनाया, बच्चों को फिट रखने के लिए जुम्बा डांस का सहारा लिया। श्रीमती अर्चना गुरुंग को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। Yes, good evening, friends. So, I'm Archana Gurung, and I'm principal of a government senior secondary school, Jorethang. I hope I'm audible. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I can hear you. Yeah, okay. Okay, because network here is really bad. So I did my schooling, my graduation, post-graduation, and B.Ed from Dehradun, Uttarakhand. And then in 1996, I came to Sikkim and I joined as a PGT English in a government senior secondary school. And then in the year 2010, I was promoted as principal, and I was first transferred as principal to Namchi Girls Senior Secondary School, South Sikkim. After that, I was transferred to Mangshila Senior Secondary School in North Sikkim. And since 2016, I am working at Jorethang Senior Secondary School. So I'll start with my presentation. Yes. So is it? Can you see my slides on the screen? Hello. Yes, ma'am. Hello. Okay. So in keeping with today's theme, my topic is community participation and joyful learning at Government Senior Secondary School, Jorethang. So first of all, in the year 2016, I, along with my school staff, students, and school managing committee and guardians, we came up with we made the school's vision, which says an institution committed to academic excellence and integrity. So till now, whatever activities we are doing is directly linked to our school's vision. So when I joined Jorethang Senior Secondary School, there were a few challenges there. First of all, Jorethang is a border town, and this town is separated from West Bengal by river Rangit. And then Jorethang is also a hotspot for drug peddling, and the school doesn't have any boundary wall, so it's a public thoroughfare.
Then I noticed negative peer pressure also at school, and then there was an increased rate of student absenteeism. So these were the challenges that I had to. Uh, just a minute. Yeah. So yes. So taking all these challenges into consideration, I'll be first speaking about joyful learning that is happening at my school. So the first and foremost thing that I KG to class 5, it was in the morning session from quarter to 8 till 10:30. And then that after the primary students would go home, then the upper primary and the senior secondary school would start. So it would start at quarter to 11. So there was very little, you can say, interaction between the students, amongst the students and the teachers of the two shifts. So what I did is, with the help of a local Zumba instructor, who volunteered to teach Zumba to my students and teachers free of cost, I initiated Zumba classes twice a week, in which my students and teachers also started participating. So what happened? It was sort of an icebreaker, and the teachers and students who were not meeting regularly, I mean, of the teachers and students of both the shifts who were not meeting regularly, were now exercising together. So it was a very early in the morning. It would be a very joyous kind of an atmosphere at the school. So, but just it was not only dancing and exercise. It also taught the students that fitness was very important, and then they also started exploring, the world of fitness and dancing, and then they were learning how to combat obesity. They were developing, friendly friendships with each other, and they were also learning about body coordination. So this Zumba class was in a very enjoyable manner. They were learning many things. Then I also introduced this school band. Actually, the main goal behind starting the school band was that there was truancy and absenteeism amongst the students. So I and my some of my teachers, we discussed that we should find a way out to engage the students at school, so that they would really, love coming to school. So then this introduction of school band, this idea was created, and the students then, we sort of first tried to rope in the students who were quite, academically they were quite a bit weak, those who were, not very interested in studies. So we engaged them, we roped them in the school band, and then what happened is, slowly through this school band, they started learning the concept of teamwork, and then they started really enjoying the, playing music and learning music. Their attendance also naturally improved, because one condition to be in the school band was that the attendance had to be good. So that was another, that was another thing, that this band was an attraction for them to come to school. And then these students, they also were learning discipline now, because school band meant that they had to march together, they had to play together, everything when they were doing together. And then they also knew that if they, if they were not disciplined, they might be chucked out of the school band. So they started learning discipline as well. And then the teachers came in to help. Community was also helping us to really build this band. And then slowly, these the students really started doing well, and they started gaining confidence when they started getting appreciation from others from all corners. These students who were earlier thought to be, who were not very good, these students, when they started gaining praises, they automatically started improving. There was a very, a very, we could really, it was very evident. The improvement in their behavior, in their discipline, in their academics were very evident. And these students,
they were so much motivated by being a part of this band that they stood first in the state level competition. Then they also won the Northeast zonal level competition in Guwahati. And ultimately, finally, in December 2018, the school band won the National Inter-School Band competition in Delhi. So our school band is the only band of Sikkim who have reached so far. And another feather in the cap was when the school band was invited to Delhi to meet Prime Minister Narendra Modi at his residence. And they were also felicitated by the then Defense Minister, Srimati Nirmala Sitaraman. Then they also got to perform at the National Police Memorial at Delhi, along with the band of the police. So, in fact, what happened that this small step, in fact, became a hugely successful project of the school. And this band just did not mean motivation of the members of the band, but it was a very motivating factor for the juniors as well. Because now the juniors were looking up to these students, and they also now they are also striving. They have also started to strive to be in the part of the to be a part of the band, and they know that since these role models are in front of them, they know that to be a part of such band, they have to do academically good also. So there has been a vast academic improvement amongst the students, and truancy and absenteeism has also been checked to a large extent. Then, in order to build the confidence of the students and also to develop their vocational skills and to develop their speaking and listening skills, as well as improving their literacy skills, JSS School Radio was also introduced in the year 2016. So we have a small studio in our school, and we have a local radio jockey who would take classes and who trained our students. And the an alumnus of our school is very actively supporting us, where the the what you call this technical aspect is concerned. So there are teachers who are also getting a platform to showcase their talent. Through this GSS school radio, we came to know that a teacher of my school was a part-time radio announcer. So he also got to show his creativity. He also pitched in to help our students to learn the skills of speaking. And we have made lots of radio programs where students are speaking about drug addiction. They have gone out to the community, interviewed them. We have made programs on environment. We have made programs about the the issues, the burning issues of the present students. So all these things are these radio programs are also broadcast at the school at regular intervals. So this GSS school radio is one more attraction that the students have really loved to participate in. And this radio is also a medium of helping the students to improve their skills and creativity. And our students, they are also learning how to the sound how to do sounds the sound setting, all these things they are learning. So later on, if they want to, they can go for further trainings and they can always become radio technicians, RJs, etc. Then, since truancy was another one major challenge, so this attendance, taking attendance 5 times a day has been introduced in our school. So the first attendance is taken right at the assembly ground. Then once they go to their classes after the assembly, again the class teacher takes the attendance. Then we have fixed the time where the subject teachers, they constantly they take attendance and they put the slash marks on the in front of the name. So by the time the school is over, the student has one star every day for being present throughout the periods. So this way, truancy has been checked at our school.
Then we also have to make our classes very joyful and engaging. It is very, very important that teachers are also, they are also prepared beforehand, and they also learn from each other. So this practice of peer observation was also introduced at my school, where teachers would observe each other's teaching practices, learn, and they would learn from each other. They would give feedbacks to each other, so that it would help in better student learning. Then print-rich classrooms is another most important thing, where we talk about joyful classrooms. Then in the primary section, we have one teacher, one classroom practice going on. So one teacher, one classroom practice actually is based on the concept that if a student is, in each class, there are students of different learning styles. So if a single teacher is with the students the entire day, she or he will know that how with which method can her child learn better. So it becomes very easy for her to apply that method to teach the child, so that they learn. And then when the students are familiar with their teachers, naturally they become more open. They are more familiar, and they are more free to ask their teachers regarding the problems that they are having. So this is one thing that I have also introduced in the primary section. Then an exclusive reading room, although we have a school library, but then for the primary section, for the little children, I have another exclusive reading room, where the children, as you can see in the picture, the children, they go and the teachers, they take them, and the students, they read books. Teachers, they also have reading sessions where they tell stories to the students. Then in one picture, you can see that the girls are playing football. So this gender issues also we are addressing here at the school, so that there is no gender bias, which is really one thing that we have done. Then you can see that the two teachers are also very actively participating in classroom teaching along with the students. Then in the primary section, we also have practiced this system of celebrating different festivals. Along with the national festivals, as you can see, there's this little child who is dressed up as Santa Claus, and he is distributing gifts to the teachers. So in this way, the reason for why we are encouraging celebration of different festivals is so that children, they understand and respect the different cultures and customs and traditions and religions of each other, of their friends as well. Then we have these field trips. You can see in the picture that how the children, they are in the fire station, and a fireman is telling them about the fire engine, and they, in this way, the children, they really enjoy, and it's more, they learn more easily when they go out and see with their with their eyes, and they can feel it with their hands. They learn very easily. Then their children, they're taken to nature walks, because when these nature walks, when they go there, then they can develop deep connection with nature. And along with this, there is a physical, emotional, and social development also amongst the children. So nature walk, in fact, not only makes them aware of nature, but there are other, they are developing physically as well, emotionally as well, and socially as well. Then teacher guardian concept is also practiced here at our school, where each teacher, in fact, each child has a guardian teacher, and each teacher has a group of 20 to 25 students under with him or her, and that teacher keeps a record of those students, and whether it is academic or whether it is health, all these things. And this way, there is a bonding between the teacher and the students. And this concept is being practiced here. Then remedial teaching is done, where the students who are struggling in their studies, they are being helped by teachers, so that they keep up with their with their classmates. Then there have
through these joyful learning practices, there have been lots of achievements in our school. To point out a few, we have had district toppers. Then our students have been selected in the Chief Minister's Meritorious Scholarships. Then uh, we have stood third in the national level Kala Utsav dance competition. Then in NSS also, last year our NSS volunteers, our school was declared as second in the state. Then our cricket team also has been was declared as state champion last year. And then NCC also was introduced in the year 2017, and here also students are doing tremendously well. Our students have represented the state in Thalsena Camp, Republic Day camps, and they have won gold and silver and bronze governor medals as well. So these are the the joyful environment and the joyful learning that our students are experiencing. Then I'd like to throw some light on the community participation that is happening in the school. And this proverb, African proverb, is very close to my heart, which says, "It takes a whole village to raise a child." So a school can never work in isolation. And in keeping with that, the NSS volunteers of our school was quite very active during the COVID-19 lockdown. So at that time, the NSS volunteers and the teachers prepared masks and hand sanitizers, which were made with WHO approved ingredients. And these masks and hand sanitizers were distributed to the public. Then hand washing points were set up in the town, and the people of the community, they were taught proper hand washing techniques. In fact, the student of my school have also prepared this hand sanitizer, automatic hand sanitizer machine at the school, which runs on sensor. Then, since drug abuse, substance abuse is a very, very glaring problem, a very glaring challenge at Jorethang Senior Secondary School, so I have always sought the help of the community to come forward and support us in the to combat this problem. So we have timely meetings and counseling sessions with the guardians and students. The police is helping us a lot, where since there is no boundary wall in our school, so the police comes and does patrolling of the school campus during the school hours also, so that the unwanted trespassers are not allowed in the school campus. Then we have also started this trend of inviting youth speakers who are doing well in the state, in the society, so to come to the school and give motivational talks to the students. Because what we feel is, when somebody near the age of the students comes and speaks with them, students can really connect with them. So, and these young speakers also are more aware of the issues of the students. So they come and give talks regarding teenage issues. They talk about career counseling, self-reliance. We have had entrepreneurs, we have had doctors, we have had media persons coming and volunteering and coming and giving motivational talks to our students. And our students have really opened up, and they have asked questions. They ask questions to such youth speakers, which they might hesitate to ask the teachers as well. So this way, there is a lot of we have a lot of interactive sessions between the students and the motivational speakers and the counselors. So, as you can see in the pictures, we have had this campaign where IAS officers, sports persons, police officers, media people, government officers, politicians, they have joined hand with us, and they have also our school has come up with the slogan, "I am in control, I am high in life, but I don't do drugs." So these successful people, they come and they are an example for our students that to be successful, drugs are not required. Without drugs,
people can become successful. So this is one more initiative we have taken up. Then, as you can see, there have been community outreach programs, and again, like only combating drugs in one school is not enough. So we initiated in the year 2016. We adopted the schools of our surrounding area, where our teachers and our volunteers, we had volunteers. These volunteers went to these schools, interacted with the students of these different schools, talking to them, sharing with them about drugs abuse and substance abuse. So this way, we have engaged the other schools also in this fight against drugs and substance abuse. Then the community has really helped us in all our initiatives at school. When we set up the school band, being a government school, it was quite impossible for us to invest such a huge amount in the band. So then the community came forward. We had senior citizens who volunteered to buy costumes for the band. Some community members bought musical instruments. Then an NGO came forward and contributed 50% of the honorarium which we were giving to the music instructor. Then the alumni also is very active here at our school, and as you can see in the picture, the alumni, they made a brand new school main gate for the school. Then the drinking water taps, these points were also given to us by the ex-teachers. The midday meal dining shed was constructed by our alumni. Then this, you can see this brick school fencing. So on one side of the school, we have this brick fencing, which was again built by a neighbor. Then we have people who have donated books for the school library. And as you can see in the second picture, the school assembly ground is being metalled. And this also, the school assembly ground was in a very bad shape, but now we have a well-metalled school assembly ground. Then the school playground also was widened and leveled. And so now we have a very good school playground as well. So then we had this empty space, which was not, it was just being used as a playground. Then the neighborhood, the community members, they came and they have made two beautiful badminton courts at this place, where now our students are also playing, and the youth of the neighborhood are also coming and playing badminton here in the evenings. So this way, what is happening is the youth are now engaged in physical exercise, and now their minds are not wandering towards drug abuse or substance abuse. Then last year there was a golden jubilee celebration at my school, and it was in 2019, and that was also done in a very grand manner with the help of the school managing committee and the school managing committee and the community. And during that time, this beautiful park with the bust of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was installed here at my school, and now we have a beautiful Dr. Sarvapalli Radhakrishnan park at my school. So these are the activities that have been happening in my school, and thank you so much. Thank you so much, Yes. Archana ma'am. Thank you. A big thank you to Yes. both our awardee teachers for their efforts towards unique initiatives and sharing the leadership mantras with us today. Thank you. Thank you. Thank you. Everyone in the audience for taking out your precious time for this virtual connect and enrichment. I believe whatever has been shared today will bring more ideas and find root in more number of schools. I take a pause with everybody today and say goodbye with this small quote. And also the quiz question that
was there. Thank you, Vidhu sir. Thank you, Vidhu Nair sir. You have answered it correctly. The quote is by Nelson Mandela sir. What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead. Vidhu sir has answered it correctly. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. I'll leave everybody today on this Saturday saying happy weekends ahead.